जलतज्ञ डॉक्टर अविनाश पोळ, हिवरे बाजारचे गेम चेंजर सरपंच पोपटराव पवार, पाणी फाउंडेशनचे नॉलेज पार्टनर वॉटरचे क्रिस्पिनो लोबो डॉक्टर मार्सेल लोबो हे सर्व मान्यवर उपस्थित आहेत. आपण सर्व जाणताच सध्या मुंबईत मेक इन इंडियाचा बोलबाला आहे. एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट या ठिकाणी होत आहे आणि आमिरजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मला वाटतं आपण आमिरजींच्याच भाषेत बोलायचं तर त्यांचा नवीन चित्रपट आला की लगेच आपण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बघतो आणि जर आपण मेक इन इंडिया या वीकचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन असं जर म्हटलं तर आताच थोड्या वेळापूर्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी माहिती दिली आहे की पहिल्याच आठवड्यात या मेक इन इंडिया सप्ताहात 8 लाख कोटींची गुंतवणूक या महाराष्ट्रात होते आहे आणि अतिशय भव्य असं आयोजन हे झालेलं आहे. या ठिकाणी हे इतके मोठे उद्योगपती आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमिर खान उपस्थित आहेत तेव्हा सगळ्यांना नक्कीच वाटलं असेल की काहीतरी इंडस्ट्रीशी संबंधित घोषणा, एखादा करार होतोय की काय, अशी सुद्धा आपल्या सगळ्यांना एक शक्यता वाटली असेल. खरं तर ही गुंतवणूक होणार आहे. या ठिकाणी या गुंतवणुकीचीच घोषणा आहे. परंतु ही गुंतवणूक आहे भावनिक गुंतवणूक. ही गुंतवणूक आहे पाण्यासारख्या एका संवेदनशील विषयावर होणारी गुंतवणूक आणि त्यासाठीच हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. आमिरजी, थोडंसं मी आपल्या भाषेत बोलते आणि सगळ्यांना फ्लॅशबॅकमध्ये नेते. 31 ऑक्टोबर 2014 या दिवशी राज्यात युवा तडफदार नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यमान सरकार अस्तित्वात आलं आणि गीत नया गाता हूँ या भावनेतून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची नव्यानं पुनर्बांधणी हाती घेतली. व्हिजन महाराष्ट्र, मिशन महाराष्ट्र या उद्दिष्टासह नवीन मुख्यमंत्र्यांनी जे पहिले 5 निर्णय राज्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने घेतले त्यात जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणाही होती आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना जलसंधारण खात्याच्या मंत्री या नात्यानं माननीय पंकजाताई यांनी अतिशय त्वरेने उचलून धरली, कारण पाणी हा त्यांचासुद्धा आवडता विषय आहे. परळीला आमदार म्हणून असताना त्यांनी तिथे अनेक प्रकल्प राबवले होते आणि परळी पॅटर्न हा या खात्याच्या मंत्री म्हणून त्यांनीसुद्धा प्रामुख्याने पुढे न्यायचं ठरवलं आणि वर्षभराच्या काळात पाणी टंचाई आणि दुष्काळ निवारणाच्या दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी अशा उपाययोजना हाती घेऊन शेती आणि पिण्यासाठी शाश्वत पाणी पुरवठा देणारी ही योजना आपल्या राज्यात सुरू झाली. दरवर्षी 5,000 असे 5 वर्षात 25,000 गावं टंचाईमुक्त करण्याचं हे उद्दिष्ट. गावात पडणारं पाणी तिथेच मुरलं पाहिजे, त्यासाठी विकेंद्रित जलसाठे निर्माण केले पाहिजे यावर भर देण्यात आला आणि कृषी, फलोत्पादन, रोजगार हमी योजना, एकात्मिक पाणलोट विकास अशा वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांचं एकत्रीकरण करून गेल्या वर्षभरात 24 TMC पाणी आणि 6 लाख एकरचा भाग ओलिताखाली आला आहे आणि 6,000 दुष्काळ प्रवण गावांना त्याचा लाभ होणार आहे. तर हा पहिल्या टप्प्याचा कार्यक्रम एकीकडे अतिशय सगळ्यांकडून त्याचं प्रशंसा होत असताना, अगदी तज्ञ राजेंद्र सिंह यांच्याकडून प्रशंसा होत असतानाच या महत्त्वाच्या प्रश्नावर अनेकांचं लक्ष वेधलं गेलं प्रश्नाकडे आणि अनेकांनी या समस्येला सोडवण्यासाठी मदतीचे हात देऊ केले आणि त्यातलंच एक नाव म्हणजे आमिर खान. आज ते आपल्या उपस्थित आहेत आणि अतिशय महत्त्वाची घोषणा ते या निमित्ताने करणार आहेत. तर आमिर जी, अभी मैं फ्लैशबैक से अभी के मोमेंट पे आती हूँ. आगे की कहानी आपसे सुनने के लिए मैं आपको निमंत्रित करती हूँ. नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ आए हैं. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है हम सब के लिए, ख़ास करके मेरी टीम और मेरे लिए. हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, थोड़े नर्वस भी हैं. दरअसल मैं अभी फ्लैशबैक में जाऊंगा थोड़ा और फ्लैशबैक ये है कि जब हमने कई साल पहले सत्यमेव जयते शुरू किया था तो उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोगों का क्या रिस्पांस होगा उसकी तरफ. सोशल टॉपिक्स को लेके हम एक शो बना रहे हैं. तो आम तौर पे जो लोग हमको जानते थे वो कहते थे कि आमिर जी आप स्टार हो तो एक आध एपिसोड लोग देख लेंगे, उसके बाद आपका शो चलने वाला नहीं है. ये नॉर्मल रिस्पांस हमको मिलता था जिससे पहले कि जब हम शो प्लान कर रहे थे. फिर शो टीवी पे आया और हमें इतनी खुशी हुई कि वो शो लोगों में इतना
पॉपुलर हुआ, लोगों के दिलों को उस शो ने छुआ। और इससे हमें एक बहुत ज़रूरी मैसेज हमको मिला कि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, वो पॉजिटिव चेंज लाना देखना चाहते हैं। और इससे हमें बहुत इनकरेजमेंट मिला। 3 सीजन्स हमने इस शो के किए हैं और हम पिछले 5 साल से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, सत्यम जयते के साथ। और एक दिन सत्या जो हैं, जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, सत्या और मैं बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे कि हमने सोचा कि कम्युनिकेशन, हम बेसिकली कम्युनिकेटर्स हैं, हमारा काम है कम्युनिकेट करना। और एज कम्युनिकेटर्स हम क्या योगदान कर सकते हैं किसी भी विषय को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो टेलीविज़न शो के ज़रिए हमारा योगदान बहुत ही पावरफुल रहा। उसके उदाहरण हमारे सामने आए। जो भी टॉपिक हमने उठाया उसका हमने ऑन ग्राउंड इफेक्ट देखा, और वो इफेक्ट देख के हमको लगा कि वाकई हम भी कुछ ना कुछ योगदान कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में और इश्यूज को टैकल करने में। और फिर सत्या और मैंने कहा कि हम अगर ऐसा करें कि हम एक टॉपिक लें और उस पर हम पूरा फोकस डालें, तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने टीवी शो में 2 कदम आगे बढ़ा है, तो अगर हम एक टॉपिक को लेके उसके साथ जुड़ जाएं, उसको छोड़े नहीं तब तक वो कंप्लीट ना हो, तो हम कितने कदम और आगे ले सकते हैं। यहाँ से हमारी बात शुरू हुई और हम दोनों को लगा कि हमें कई टॉपिक्स हमने लिए हैं, करीबन 24 टॉपिक्स हमने उठाए थे सत्यम जयते में। तो हम दोनों को ये लगा कि जो टॉपिक हम चाहते हैं वो है पानी और महाराष्ट्र। पानी इसलिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सबके लिए, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि हम दोनों यहीं के पैदाइश हैं, सत्या और मैं, हम दोनों, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो हमको लगा कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, पानी और महाराष्ट्र। और उसके बाद हमने सोचा कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें सरकार से मिल के बात करके देखना है कि हम किस तरह इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। और फिर मेरी देवेंद्र जी से एक जगह मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो देवेंद्र जी वॉज वेरी प्रॉम्प्ट। उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, हम लोग मिलेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं इस विषय पर। और वो दिन मुझे याद है, कोइंसिडेंटली वो महाराष्ट्र डे था, 1 मई पिछले साल 2015 1 मई को मैं देवेंद्र जी से मिलने गया, सत्या और मैं। और उन्होंने हमें बताया कि जल युग शिवार के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, क्या क्या सरकार कर रही है इस प्रोग्राम को लेकर, और कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, और क्या विचार है इस सरकार की जो ये चीज़ को आगे ले जाना चाहती है और महाराष्ट्र का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। वो सुन के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिला, और हमको लगा कि हमें ज़रूर इस कदम में, हम इस पाथ में हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई, प्रभाकर जी से, प्रवीण जी से, उनकी पूरी टीम आई, हम लोग साथ बैठे, बहुत सारे सेशंस हुए। हम कम्युनिकेटर्स हैं, हमको इस विषय के बारे में समझना है इससे पहले कि हम कोई भी कदम आगे लें। तो पिछले 1 मई से लेकर अब तक ऑलमोस्ट अभी 8-10 महीने हो गए, और हम लोग इस पे इतने महीनों से काम कर रहे हैं। हमारा क्या योगदान हो सकता है इसमें? हमें ये लगता है कि जैसे देवेंद्र जी ने मेरी फर्स्ट मीटिंग में मुझे कहा कि जब तक ये गवर्नमेंट स्कीम रहेगी तो कामयाब होगी, लेकिन जब तक ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट नहीं बन जाती तब तक इसका फुल इम्पैक्ट हम नहीं देख पाएंगे। और देवेंद्र जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसमें जुड़ें और आप इसको एक सिविल मूवमेंट बनाएं, सिविल सोसाइटी को इसके साथ जुड़ना है। और वही कोशिश हमने की है। उसके बाद मैंने, मेरे जो दोस्त हैं, रतन टाटा जी हैं, मुकेश भाई हैं, कुमार बिरला हैं, यहाँ सब मौजूद हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उन सबको मैंने घर पे बुलाया और हमने जो प्लान बनाया था हमने उनके साथ शेयर किया। पोपटराव पवार जी आए हैं हमारे साथ, डॉक्टर पोल हैं। तो हम सब मिलकर हमने एक टीम बनाई जो, जिसको हम बोलते हैं हमारी एडवाइजरी बोर्ड, जो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम निर्णय लेते हैं कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। तो ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो आगे आए हैं, जो एकजुट हुए हैं इस बड़ी समस्या का सामना करने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए अगर हम आगे आएँ, हम सब मिलें तो वो सॉल्व ना हो। और ख़ास करके पानी, मैं बताऊं, पानी जो है, इफ़ वी रिस्पेक्ट वाटर, वाटर विल रिस्पेक्ट अस। और ये एक चीज़ है जो हम सबको जोड़ेगी, क्योंकि पानी को अगर आपको पकड़ना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। हमारे बीच में गैप ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए, वरना पानी वो गैप से निकल जाता है। तो हम सबको एक होना पड़ेगा और तभी हम पानी को रोक पाएंगे।
पानी की इज्जत करनी होगी, तभी पानी हमारी इज्जत करेगा। और इस इनिशिएटिव के लिए हमने कई आइडियाज़ हमारे सामने आए। हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को कम्युनिकेट करें, हम उनको एजुकेट करें। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पानी को लेकर सालों से काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। सरकार जल युग शिविर के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। हम एक चीज़ समझ चुके हैं इस पूरे जर्नी में कि ये एक साइंस है जिसका सल्यूशन हमारे सामने है। पानी की प्रॉब्लम को लेकर हमें करना क्या है? हमें हर गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है। ये एक प्रूवन साइंस है, जहाँ जहाँ ये इसका इस्तेमाल किया गया है ये काम करता है। इसको स्केल अप कैसे करना है? अभी कुछ गांव में हो रहा है। इसको महाराष्ट्र में 46,000 विलेजेस हैं। अगर बहुत छोटे जो गांव हैं उनको अगर गिने तो करीब 80,000 के, am I right? Around 80,000 विलेजेस, वेरी स्मॉल वंस। तो ये पूरे महाराष्ट्र में किस तरह फैलेगा? और हमारी उम्मीद है कि ये एक ही तरह फैल सकता है, जबकि हर महाराष्ट्र का रहने वाला इसमें आगे आए और अपना योगदान दे। और अगर हम ऐसा करें तो ये यकीनन सॉल्व हो सकता है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ये वक्त आ चुका है हमें इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा एफर्ट है जो सीएम साहब ने शुरू किया है, हम भी उसमें जुड़े हैं। और ये बहुत बड़े एफर्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हम सब का हाथ है। इसमें हम सब, हर एक महाराष्ट्र के हर एक इंसान का इसमें योगदान है और हम सबको इसमें आगे बढ़ना है और तभी ये सॉल्व हो सकेगा। इसके लिए जो हमने पहला कदम चुना है वो एक वाटर कप है, जिसको हम कहते हैं कि सत्य में जयते वाटर कप, हमने उसको नाम दिया है। सत्या उसके बारे में आपको और बताएंगे, लेकिन ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत से हम सीखना भी चाहते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं गांव में, उनके साथ हम समझते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है। इतने सालों से हम इस बात से हम इफेक्ट होते हैं। हम इसके बारे में हमें चिंता होती है और हम चाहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस प्रॉब्लम का सामना करें। ये हमारी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश जो है वो कामयाब होगी। मैं अभी सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इस सत्य में जयते वाटर कप के बारे में बताएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री साहेब, माननीय पंकजाताई, माननीय शिवतरे साहेब, इतर मान्यवर, प्रेसमधील बंधू भगिनी, मी अगदी थोडक्यात बोलतो। दोनच मुद्दे आहेत। पहिला मुद्दा हा की या सगळ्या कामासाठी आम्ही पाणी फाउंडेशन नावाची एक संस्था बनवली आहे। म्हणजे सत्यमेव जयतेची जी टीम आहे ती पाणी फाउंडेशन बनवून इतर अनेक जी मान्यवर आपल्याला दिसत आहेत त्याच्याबरोबर जोडली गेलेली आहेत ही मोहीम करण्यासाठी। पाणी फाउंडेशन 3 महत्त्वाच्या क्षेत्रात काम करणार आहे। पहिलं काम आहे कम्युनिकेशन। टीव्ही, सोशल मीडिया, इंटरनेट या सर्व 360 डिग्रीज या सर्व कम्युनिकेशनच्या मार्गांना याचा अवलंब करायचा आहे। कारण जे आमिरजींनी सांगितलं की आपल्याकडे या प्रश्नाचं उत्तर अनेक वर्षांपासून आहे, नो हाव अनेक वर्षांपासून आहे। नो हाव आहे पण नो स्केल, नो हाव बट नो स्केल। नो हावला स्केलला नेण्यासाठी कम्युनिकेशन फार एक महत्त्वाचं साधन आहे। अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे हिवरे बाजार, रालेगण सिद्धी ही यशोगाथा आपल्या समोर आहे। प्रश्न असा आहे की आपण प्रत्येक गावात हे कसं आपण जागृत करू शकतो, कसं आपण हजारो रालेगण सिद्धी आणि हिवरे बाजार तयार करू शकतो। याच्यामध्ये कम्युनिकेशन एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते असं आम्हाला वाटतं, की ज्यात आपण प्रामुख्याने लोकांना हे दाखवून द्यायचं आहे की विकेंद्रित वॉटरशेड मॅनेजमेंट हाच शाश्वत उपाय आहे। कारण हे अजूनपर्यंत पूर्णपणे लोकांमध्ये रुजलं गेलेलं नाहीये। तर हे एक कार्यक्षेत्र झालं। दुसरं कार्यक्षेत्र झालं म्हणजे की ज्या लोकांना यात उतरायचं आहे त्यांना प्रशिक्षण देण्याची खूप गरज आहे। आणि पाणी फाउंडेशन फार मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित वॉटरशेड मॅनेजमेंट कसं करावं यावरती काम करणार आहे आणि प्रशिक्षण देणार आहे की जेणेकरून वैज्ञानिक पद्धतीने, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने हे कसं करता येईल। आणि तिसरं आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की गावाला पटलं की आपल्याला हे करायचं आहे, त्याबद्दल प्रशिक्षणही झालं, पण शेवटी त्यांना मदतीचा ओघ लागेलच। आणि सध्या मदतीचा जो ओघ आहे NGOज तर देते आहेत, शासन मोठ्या प्रमाणावर देते आहेत, पण ज्या गरजा आहेत 88,000 गावं जी आहेत महाराष्ट्रामध्ये त्यांना ज्या प्रमाणात मदतीचा ओघ हवा आहे तो एकच सोर्समधनं येऊ शकतो आणि ते म्हणजे या देशातील जनता।
आणि गेल्या वर्षभरात जलयुक्त शिवारचं मला वाटतं सर्वात महत्त्वाची जमेची बाजू ही आहे की हा मदतीचा ओघ स्वतः जनतेने निर्माण केला. आणि मला वाटतं कदाचित हे पहिलं एक असं एक इनिशिएटिव्ह असेल की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग या पद्धतीने झालेला आहे. पाणी फाउंडेशन याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट करणार आहे की आम्ही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहोत. कारण आधुनिक जगात आधुनिक टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप काही अशा करण्यासारख्या गोष्टी आहेत की ज्यातून आपण या कामाला वेग आणू शकतो, गती आणू शकतो. आज मुंबईतला मध्यमवर्गीय सुद्धा इच्छुक आहे की त्यांनी मदत करावी. तर आम्हाला एक असा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करायचा आहे की जेणेकरून कोणताही व्यक्ती आणि तो जगातल्या कोणत्याही भागात असेल तो एका ॲपवरती जाऊ शकतो. त्या ॲपवरती पाहू शकतो की अमुक अमुक गावाची अमुक अमुक गरज आहे. ती साईट प्रत्यक्ष पाहू शकतो. त्या साईटचं सर्टिफिकेट असेल की वास्तविक या कामाची गरज आहे आणि या कामाचा जो खर्च ग्रामपंचायत सांगते तो खर्चही त्यांनी योग्यरित्याने कॅल्क्युलेट केलेला आहे. मग मी सरळ डिजिटली ते पैसे ट्रान्सफर करू शकतो पंचायतीला. या सगळ्या कामाला अर्थात थोडा वेळ लागेल आणि या पहिल्या वॉटर कप एडिशनमध्ये होणार नाही आहे. पण या दृष्टीने ऑलरेडी आम्ही पाणी फाउंडेशनच्या वतीने काम सुरू केलेलं आहे आणि डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा तंत्रज्ञानासाठी आणि फंडिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात वापर कसा करता येईल याच्यावरती आम्ही काम सुरू केलेलं आहे. तर हे झालं पाणी फाउंडेशनचं. पुढचा मुद्दा झाला सत्यमेव जयते वॉटर कप. थोडक्यात सांगतो, जी गावं जलसंधारणाची सर्वात चांगली कामं करतील कॉम्पिटिशनच्या कालावधीत त्यांना बक्षिसं दिली जातील. त्याचे रूल्स काही दिवसात आम्ही प्रकाशित करू की जेणेकरून सर्व गावांना समान संधी मिळेल आणि त्यात विशेष श्रमदानाला आम्ही महत्त्व दिलेलं आहे. तर जे गाव पहिलं बक्षीस आहे 50 लाख, दुसरं बक्षीस आहे 30 लाख आणि तिसरं बक्षीस आहे 20 लाख. सध्या ही स्पर्धा पायलट स्केलवरती होते फक्त 3 जिल्ह्यात. त्या 3 जिल्ह्यातही प्रत्येकी एका तालुक्यात म्हणजे साधारणपणे 350 गावं यापासून सुरुवात होते. त्याचं कारण असं आहे की आम्ही नवे आहोत या क्षेत्रामध्ये आणि आम्हाला खूप जाणीव आहे आमच्या त्रुटींची. त्यामुळे आम्हाला पावलं अशी घ्यायची आहेत की जे आम्हाला झेपेल, जमेल आणि फार मोठ्या चुका होणार नाहीत. ज्या होतील त्याबद्दल इन ॲडव्हान्स मी आपली क्षमा मागतो. पण असं मोठं काम करताना छोटी पावलं घेऊनच ते वाढवता येईल आपल्याला. त्यात फॉर्च्युनेटली आम्हाला वॉटरसारखे नॉलेज पार्टनर मिळालेले आहेत. पोपटराव पवार आहेत, डॉक्टर पोळ आहेत, इतर अनेक मंडळी आहेत. तिकडे अभिजित अवस्थी बसले आहेत साईडवेज कन्सल्टिंगमधनं. बरीच लोक आम्हाला मदत करतात. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की ही स्पर्धा आम्ही का घेत आहोत, कुठे घेतो किंवा बक्षीस काय हा गौण मुद्दा आहे. या स्पर्धेमागे एक फिलॉसॉफी आहे. ती फिलॉसॉफी ही आहे की आज तळागाळात गावागावामध्ये एक फार मोठी एक फळी उभी राहते युवकांची, लोकांची, जी काम करण्यास, सकारात्मक काम करण्यास इच्छुक आहे, उत्सुक आहे. कुठेही त्यात राजकारण नसतं, कुठेही स्वार्थ नसतो. त्यांना फक्त आपल्या गावाचा विकास हवा असतो. आणि ही मुलं, हे ग्रामस्थ, हे शेतकरी अतिशय म्हणजे सिन्सिअरली काम अनेक वर्षांपासून काम करतात. पण आज आपल्याला त्यांची नावं फार कमी प्रमाणात ठाऊक आहे. त्यांचे चेहरे आपल्याला ओळखीचे नाही आहेत आणि त्यांना अनेक वेळेला वाटतं की आपण काय एकटे आहोत या जगात. आपल्याला एव्हरीवन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर होल. तर आपण या युवकांना एक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने आणि एका वाईडर कम्युनिटीशी लिंक करण्याच्या दृष्टीने ही स्पर्धा एक फार महत्त्वाचं एक साधन आहे. स्पर्धा निमित्त आहे. आपले ध्येय आणि उद्दिष्ट आहे जलसंधारण. आणि यातनं या युवकांना मला वाटतं खूप हिंमत मिळेल, एन्करेजमेंट मिळेल. कारण 2 महत्त्वाच्या गोष्टी आम्ही करणार आहोत. प्रत्येक तालुक्याला एक सेलिब्रिटी मेंटॉर मिळेल किमान, की जो सेलिब्रिटी मेंटॉर गावागावात फिरेल, प्रोत्साहन देईल. आणि एक टेलिव्हिजन शो येईल जो या वॉटर हिरोजना आपल्या राज्यासमोर, आपल्या देशासमोर त्यांचे चेहरे मोहरे फेमस करतील. आज अशी परिस्थिती आहे की आपण फेमस कोण होतो? फिल्म स्टार फेमस होतात, क्रिकेटपटू फेमस होतात आणि त्यात काही गैर नाही आहे. पण माझ्या दृष्टीने शतकवीर तो नाही आहे जो सेंचुरी काढतो टेस्ट मॅचमध्ये. माझ्या दृष्टीने शतकवीर तो आहे किंवा वीर योद्धा तो आहे जो 4 वर्ष दुष्काळ सहन करूनही जो खंबीरपणे उभा राहतो आणि आपल्या गावाची एकी बनवून जलसंधारणाचं काम करतो, जे आज आपण फार मोठ्या प्रमाणात पाहत आहोत. आणि त्यांना आपल्याला महाराष्ट्र समोर यायचं आहे. तर ही संपूर्ण जी स्पिरिट आहे याच्यावरती आम्ही एक छोटीशी फिल्म तयार केलेली आहे. तर आपली जर
परमिशन असेल तर मी एक छोटी फिल्म की कोणत्या भावनेने कोणत्या स्पिरिटने पाणी फाउंडेशन काम करू इच्छिते हे प्लीज प्ले करा. पण सगळ्यांनी घेतलाच आहे. आणि आमिर जी, ये आज जो यहाँ मीडिया सब आया है वो एक बहुत सेंसिबल मीडिया है, सेंसेशनल नहीं है, तो वो एक वार्तालाप के लिए अभी मैं आपसे उनको वार्तालाप करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ. Question is, Maharashtra as a state, though it's an industrially leading status and everything, this is the third or fourth consecutive year when we are reeling under drought, and it's a very, very massive problem. So, apart from this foundation and all, I mean, where you think the problems, how it's going to be resolved? Because apart from creating awareness and all that, that's one aspect, the communication aspect. But the moot question is, how do you translate the public's faith already in the system under the leadership of CM, whatever we saw 350 crore and all that. As a communicator, how you are going to multiply this faith, and where do you find a solution to this? And how are you going to work, apart from just the episode? Yes. Well, first of all, I want to say that what Jalyu Shivar is, the path that is going on, is already a path that we all believe in. It is a path that tells us that this is a science. It believes in solving the problem locally. So that each village becomes self-sufficient through water harvesting, through water management, through creating budgets for how to use the water. These are the various things that are tried and tested, as we know. What we are trying to do is trying to bring scale to it. I think that our effort is in trying to enthuse people, into make it into a movement, and that is where we would like to contribute by educating people, by holding, a lot of NGOs are doing very good work in Maharashtra and in other parts of India vis-a-vis water and the problems that we face with water. Most of them are investing in structures. So you go into a village, you build a structure, you build a CCT, or you build a barn, you do desilting. These are all efforts which are invested in structures. We believe that what we would like to bring to the table is we want to invest in people. All of our efforts, all of our resources will be invested in people. We want to create an army of people who we teach how to do water harvesting, the basics of water harvesting, and get them to do it for themselves. You empower people, you educate people, you empower people, and you encourage them, and you then facilitate for them how they can do it. That is what we are trying to do. Amir, one actor in recent times who selflessly donated to the cause of drought-hit farmers was Nana Patekar. CM sir also mentioned him in his speech. Do you plan to rope him for this initiative, take his inputs, and maybe make a part of your it's a coincidence I'm going to meet him today. Because I happened to see his film, Udya Bagitla, Natta Samrat. Very good film, outstanding work. And as it so happens, I'm going to be meeting him today. I will definitely talk to him about it. I think he's already doing great work in that. I think all of us have seen the kind of work that he's done. Like Nana or all of us here today, more and more people need to come forward to contribute to this cause. I think, Nana has started this, I think 1 year ago, if I'm not mistaken, about a year ago. So that's really wonderful that he's been doing such great work, and he's shown his sensitivity towards this such an important issue. So we would only like to add to that. देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, आप विदर्भ के हैं और विदर्भ पर पी साईनाथ जैसे पत्रकार, जुझारू पत्रकारों ने बहुत कुछ काम किया है, और उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उनकी कुछ खामियां भी बताई थी, और कहा था कि ये सब खामियां जब तक रहेंगी तब तक सूखाग्रस्त इलाकों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं की जा सकती हैं. इस पर विधानसभा से लेके लोकसभा तक में काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद उसका कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया. तो क्या आपकी सरकार ऐसे जुझारू पत्रकारों को, जिनको समझ है, उन्हें भी जोड़ेगी इस मिशन में? देखिए, ये मिशन ओपन मिशन है, और इसमें जो जुड़ना चाहता है और जिसको जोड़ सकते हैं सबको हम जोड़ेंगे. आपने बिल्कुल सही बात कही. साईनाथ जी ने बहुत अच्छे रिसर्च्ड पेपर्स इसके ऊपर तैयार किए, जिसका कॉग्निजेंस हमारी सरकार ने लिया, और
साईनाथ जी होंगे या इस दरमियान सरकार की भी कुछ केंद्र सरकार की कमेटियाँ थी, कुछ योजना आयोग की कमेटियाँ थी। तकरीबन अगर आप देखें तो सभी कमेटियों ने एक ही तरीके की बात कही है, और जिसमें सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये कहा है कि जो ड्राईलैंड फार्मिंग होता है, जो सूखाग्रस्त सारा इलाका है कि जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सबने पहले ये कहा कि सिंचाई की व्यवस्था दी जानी चाहिए। पी साईनाथ जी ने भी पहला कारण यही बताया है, जिससे मोनोक्रॉप के ऊपर लोग जाते हैं, फिर वो फेल होता है, भगवान भरोसे चल रहा है, तो उसको आप मॉइस्चर सिक्योरिटी दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ दैट मॉइस्चर सिक्योरिटी, क्योंकि हम जब डिस्ट्रीब्यूटर वाटर स्ट्रक्चर्स तैयार करेंगे तो उसके माध्यम से हम लोग उसको वाटर सिक्योरिटी दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कार्यक्रम ये विवादों से परे होने चाहिए और कुछ न्यूज़ ये पॉजिटिव होनी चाहिए। आमिर जी, You know, actually, I do very less work. In the last 2 years, I'm doing only one film. And even as I go ahead, while Satyajit, so I just wanted to clarify once more that the team of Satya Vijayatya is actually taken on this job. Satya is going to be working full-time on this. Lancy is going to be working full-time on this. Christopher is working full-time on this. All people who are part of Satya Vijayatya. And I will be in direct touch with Satya at all times with my team. While I will not personally be working 100%, like I'll not stop doing films as a result, but my entire involvement will be as much as I involve myself in a film. That same kind of involvement that you see of mine in a film, you will see in this project. आमिर जी, It's not a TV series. It's not a TV series. No, it's not a TV series. It's actually a movement which is going to use 360-degree kind of communication. One of the aspects will be television. Television communication will be just one of the aspects. आमिर जी यहाँ पर मेरा प्रश्न आपको है। जब आप इंडस्ट्री में आए थे, आप तो पहले ही तय करके आए थे कि पापा हमारा बेटा बड़ा नाम करेगा और अच्छा काम भी करेगा, तो आपने नाम भी किया है, अच्छा काम भी करे, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। और सर, ये आपका पहले ही तय था कि आप ऐसे ऐसे करने वाले हो? मतलब जब मैं पहले इंडस्ट्री में पहले आया था? यस सर। नहीं, उस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है। लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक कदम आगे लेते गया और क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, तो उस क्रिएटिव फील्ड में मुझे आनंद आता गया, मैं सीखता गया, मैं आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे आदमी जब क्रिएटिव फील्ड में होता है तो आमतौर पे उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसे माना जाता है। तो लोगों की ज़िंदगी के साथ जैसा मैं ज़्यादा जुड़ता गया, वैसे वैसे मेरा झुकाव सोशल इश्यूज़ की तरफ बढ़ता गया। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, ये अपने आप होता गया और ऑर्गेनिकली मुझे उम्मीद है कि आगे भी होता जाएगा। सर, माय क्वेश्चन टू CM सर, इथे सर, आपण पाणी वाचवत आहेत, पण जिथे पाणी वाहत चाललं समुद्रामध्ये, त्याच्यासाठी काय करणार आहात आपण? जसं महाबळेश्वरला म्हणता आपण, सातारा एका साईडला आहे जिथे पाणीसाठी तुम्ही जे काय करताय, त्याच्याकरताही आपण योजना तयार करतोय। आमचे शिवतरीजी त्यातले एक्सपर्ट आहेत। योजना काय आहे ते तुम्ही नंतर करणार, आता ते सांगितलं तर 15 मिनिटं त्यांना लागतील ते सांगायला, कारण ही इज अ एक्सपर्ट। त्यामुळे या पत्रकार परिषदेनंतर तुम्ही जर भेटलात तर वाहून जाणारं पाणी, पश्चिमी वाहिन्यांचं पाणी, हे कसं आपल्याला विदर्भ, आपल्या मराठवाड्यामध्ये आणता येईल, हे कसं आपल्याला पश्चिम महाराष्ट्रात आणता येईल, याच्यावर सगळं काम आमच्या सरकारचं चाललं आहे। कारण महाबळेश्वर जास्तीत जास्त महाराष्ट्रात पाऊस पडतो, सगळ्यांना माहितीच आहे। पानी का जो प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से है, थैंक गॉड कि आप आए, इनिशिएट लिया आपने अपना कंट्रीब्यूशन के लिए, इस देश के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए। सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं आप इंस्पायर्ड तो ज़रूर होंगे किसी ना किसी से, आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? दरअसल जब हमने टीवी प्रोग्राम किया सत्य विजयते, उसमें जो हमें कामयाबी मिली और हमने देखा ऑन ग्राउंड उसका रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आ रहा है,
जबकि हमने उस वक्त ऑन ग्राउंड काम नहीं किया था, हम टीवी पर ही थे। तो उसका हमने इतना स्ट्रांग रिजल्ट देखा ऑन ग्राउंड, तब हमको लगा सत्या और मुझे कि हमें एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए, और क्यों ना हम एक टॉपिक को लेके उसके साथ जुड़े रहें जब तक उसको हम सॉल्व ना करें। पानी हमको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्र के, हमारी पैदाइश यहाँ की है, और तो हमको लगा हमें इसी के साथ शुरू करना चाहिए, इसलिए हमने पानी चुना, महाराष्ट्र चुना। Amir, yeah. Hi. You was talking about the 360-degree communication that you want to kind of take forward on this issue. Just wanted to know a bit more about it, and where does TV come in, if it's part of it? Yes, TV will definitely come in. TV will come in, first of all, we'll be planning ads which will communicate about this. Also, maybe news channels which we will be working with, or even general entertainment channels that we'll be working with. I want to bring everyone together on this. I don't want to ideally go with any one channel. This is an issue which all of us have to come together. Whether it's actors, whether it's politicians, I mean, it doesn't matter which political party you belong to. It doesn't matter which television channel you belong to. All of us have to do it together. So if there's a television program, I would like it to come on every Marathi channel. It doesn't have to be one channel. Am I right, sir? It should be, we should all have to come together and put aside our differences or our competition. In our own lives, we compete. But water should bring us together. We should put aside everything. So television is an important component of it. Digital is a very important component. Digital and technology, how we use that. Radio is going to be an important aspect of it. On-ground communication is going to be an important aspect of it. So we will be using each and every aspect of communication in this. From when will it? I will not be the only person who will be the face. There will be a lot of us. Sachin will be part of it. I will be there. I'm going to be requesting as Satya was mentioning, we are requesting a lot of Marathi celebrities, sports people, actors, etc., to become mentors and to take over villages, just to encourage them. We just want them to know कि एक हम साथ में आप. एक अगर mentor अतुल कुलकर्णी को मैं request करूँ कि आप 10 villages में एक चक्कर मार के आ जाओ, और वहाँ के लोगों में इतना encouragement होगा. So we want this to become a movement where everybody gets involved. All of us get involved is the idea. So I won't be the only face. Sir will be one of the faces. Pankaj will be one of the faces. All of us will be the faces of this movement. Amir over here. The timeline, yeah. So you will have a press note which explains the details of the contest, but let me just answer that. So we are announcing this today, and we'll be writing in these 3 talukas, we'll be writing to each village to come and participate. There are 2 conditions for villages to participate. One, the Gram Sabha themselves has to decide that they want to be a part. The people have to decide कि हाँ हमको इसमें हिस्सा लेना है, and they have to select, each village has to select 5 people who they send to us for training. So each village will send us 5 people who we will train. So we have a training mechanism in place, and the last date for application is decided as 7th of March. The training will begin on 15th of March till 15th of April, and the competition begins on 15th of April till the 1st of June. Post the 1st of June, our judges will go around these villages to decide, what the results are. And after that, we will have a presentation ceremony where we will announce the next leg, how we are going further in the next leg. That is the plan at this point of time, but a detailed note would be given to you. Your left, Amir. Amir, like Nana Patekar, even Akshay Kumar has lent his support for this. So are you planning to speak to him about the issue? And actually, I'm planning to speak to a lot of people. So the more the merrier. I really feel everyone should be a part of it. Yeah. Amir, there was something about an app. Just to tell you that for Jalyukta Shivar, Akshay Kumar has donated 50 lakh rupees. So he is also part of that. Sir. Amir, there was something about an app mentioned for, Yeah, where is the question coming from? There, okay. There was something about the app. Yeah, so we want to create a digital platform. So that digital platform, in a sense, that is being worked on currently as we speak. The platform is meant to bring together people who require help and those who want to help. So it will be a platform where you will be able to go and look at the village. You will know that this village needs these maybe 10 structures or these 8 structures. What each structure is going to cost. Our experts would have ratified that. You may be someone you want to donate, you may not have time to come and actually work there. We would invite people to come and work also as Shramdhan. But if you are someone who doesn't want to, who may not have the ability to take out the time to work, but you want to contribute. You may not be in India, you may be someone who's from Maharashtra who's now living somewhere else in the other part of the world.
So you can directly contribute to that village. We will be the facilitator. We will tell you that this is the village, this is what it needs, here is what you can contribute to the village and help that village. And interestingly on this app you can monitor the work. कि मैंने ये बांध के लिए इतने पैसे दिए हैं, 1 महीने में क्या हुआ, 2 महीने में क्या हुआ, कब बांध तैयार हुआ, what it looks like visually. आमिर जी, ये इसमें one more thing can be actually added. We already have a digital platform of Jalyukt Shivar where every single work which is executed under Jalyukt Shivar, the geotagging is done on this platform. So you can go to this platform and just click and you get a Google image and a real image. And there are 3 images, before, after and while working, the 3 type of images you have. So maybe we can integrate our platform with them. They can create a payment gateway and this platform can be integrated with that payment gateway. आपण सर्वच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आणि आमिरजींना आणि Birds, will you select only a Pani Gao or you will take all the villages in competition? So any village which wants to take part is most welcome. The first, I'm just clarifying. In the first pilot, we are only inviting from 3 talukas because right now our capability to train these 5 people from each village is limited because we are just starting out. So we are starting with 3 talukas. We have here a team from water, which are the experts. They are our knowledge partners in this effort. And we right now we feel we are equipped for 3 talukas and also in providing expert advice to these villages in these 3 talukas. So right now in these 3 talukas, anyone from these 3 talukas, any village is most welcome. As we go ahead, one day we want to see every village of Maharashtra taking part in this contest. And not only village, every town and finally every city of Maharashtra should be taking part in this contest. That is our dream. मला मुख्यमंत्र्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे सर. वेळेअभावी आपण सर्वांचेच प्रश्न घेण्याचा जो कार्यक्रम तुम्ही घेतलाय हातात, तर त्याचे काही टर्म्स आणि कंडिशन्स आहेत. किती फूट खोदलं पाहिजे, किती रुंद केलं पाहिजे. तर आतल्या गावांमध्ये नाही, याच्यामध्ये बघा वेगवेगळे अप्रोच आहेत. म्हणजे कुठे काय ट्रीटमेंट केली पाहिजे, ती किती केली पाहिजे, याचे काही सायंटिफिक त्याचे नॉर्म्स आहेत. म्हणजे आपण खूप खोदत गेलो आणि ॲक्विफरच आपण डिस्टर्ब केला तर पाणी ॲब्झॉर्ब होऊ शकणार नाही. त्यामुळे साधारणपणे त्याच्या ज्या गाईडलाईन्स आपण इश्यू केलेल्या आहेत, त्या गाईडलाईन्स त्या विभागात काय केलं पाहिजे याच्या अनुसार केलेल्या आहेत. हे खरं आहे की आता काम इतकं मॅसिव्ह आहे. म्हणजे आता जवळजवळ आपण मला असं वाटतं प्रभाकर 1,25,000 कामं पूर्ण केली आहेत आणि 1,70,000 कामं ॲक्च्युली आपल्या हातामध्ये आहेत. तर त्याच्यामुळे कुठे एखाद्या ठिकाणी किंवा काही चुका होऊ शकतात, पण माझं मत असं आहे की जर कुठे चूक झाली असेल तर ती सुधारता येईल. ही